Okay, this video is about drawing of indifference curve, how to draw the indifference curve. बस लिख लिए, जो आपने लास्ट में नंबर लिखा है सेम नंबर आप x के लिए जो नंबर आपने लिया है वही आप y के लिए ले लोगे 5 5. ओके, अब यहाँ 5 5 लेकर के आपका जो नेक्स्ट और लास्ट कॉलम जो है दैट इज फॉर द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व. ये स्लोप हम स्टार्ट करेंगे बाय नंबर 1. जो हमने यहाँ पर नंबर लिया है उसी से हम इसको स्टार्ट करेंगे 1 और यहाँ से हम चलेंगे रिवर्स काउंटिंग, है ना. यहाँ 1 2 3 4, ये 4 3 2 1, ये रिवर्स हो गई. ठीक है, तो यहाँ 1 2 3 4 और इस फर्स्ट नंबर को हमें क्या करना है, ब्लैंक छोड़ देना है. अब देखिए आपने किस तरह से मैंने ये y को लिखा है. आई एम इरेजिंग ऑल दीज नंबर्स. 5 plus 1 6, 6 plus 2 8, 8 plus 3 11, 11 plus 4 is 15. So this is a way or a trick by which you can easily learn or easily understand the tabular presentation. आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं because एग्जाम में आपको tabular presentation नहीं मिलेगा. एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन इंडिफरेंस कर्व विद द हेल्प ऑफ अ टेबुलर प्रेजेंटेशन और विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ. तो यहाँ से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे, x एंड y. ओके, टू ड्रॉ इंडिफरेंस कर्व वी रिक्वायर द टेबुलर प्रेजेंटेशन. Okay, and the tabular presentation is also known as the combination set or indifference set. In this indifference set we are having different combinations which are showing combinations of good x and y which are offering the same level of satisfaction. Okay, so at combination first, consumer is consuming 1 unit of x and 15 units of y. At combination B, consumer is consuming 2 units of x and 11 units of y. और ये आप कैसे लिखेंगे, इसका ट्रिक मैंने आपको बताया था. फर्स्ट यू हैव टू राइट x कॉलम 1 2 3 4 5. द लास्ट कॉलम will be same for x and y 5 5. एंड आफ्टर राइटिंग 5 5 आपको MRS वाले कॉलम में जो लास्ट कॉलम है दैट इज फॉर द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व यू शुड राइट इनवर्स काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 एंड द फर्स्ट कॉलम विल रिमेन्स ब्लैंक. तो यहाँ से अब आप चलेंगे 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 + 3 11 and 11 + 4 15. These combinations we have to show in our graphical presentation. First of all, we will plot the first combination A. At that combination 1 unit of x and 15 unit of y. This is 1 unit of x and 15 unit of y. 15 of y and 1 unit of x. There will be the first combination. At second combination B, 2 units of x and 11 units of y, 2 units of x and 11 units of y. At C combination 3 units of x and 8 units of y. At 4 or D combination, at combination D we are having 4 units of x and 6 units 5 and 1 6 units of y. So this combination will lie here, it will be here, and the last one is 5 5 of both commodities. By adjoining all these points we will get the graph for indifference curve. This is indifference curve, the graphical presentation of indifference set. Combination A, combination B, combination C, D and E. At A, consumption level is 1 and 15 for x and y.
At B it is 2 and 11 for x and y. It is 3 and 8 for x and y. For 4 and 6, 5 and 5. This is called indifference curve. Next topic is slope of indifference curve. Slope of indifference curve can be calculated with this formula, that is delta y upon delta x. Delta refers to change in any number. Okay, by expanding this formula we can get change in consumption of good y divided by change in consumption of good x. It means if you want to measure the slope of indifference curve at any point, for example at point B, if you want to measure the slope of IC at point B, इस B पर consumption कितना है, X के लिए 2 units and Y के लिए 11 units. So at this point we have to calculate the change in Y and change in X. चेंज हमेशा कहाँ से निकलेगा, प्रीवियस सिचुएशन से. वी कैन फाइंड आउट चेंज बाय द प्रीवियस सिचुएशन और प्रीवियस कॉम्बिनेशन. व्हाट इज द प्रीवियस कॉम्बिनेशन? देन बी, एट बी वी हैव टू कैलकुलेट द स्लोप, और इससे पहले वाला कॉम्बिनेशन, द प्रीवियस कॉम्बिनेशन इज ए. एट दिस पॉइंट x is 1 unit and at this point x is 2 unit. Here y is 15 unit and here y is 11 units. Okay, so change in y, that is equals to -4, and change in x, that is equal to 1. 2 minus 1, 11 minus 15. कैसे आप निकालेंगे चेंज? डेल्टा y इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय डेल्टा x, x2 माइनस x1. y2, what is y2? y2 is 11 minus 15 divided by 2 minus 1, and this term is equal to 4 minus divided by 1. So here change in y upon change in x is equal to -4. What does it means? It means the slope is negative. Because of the negative slope, the indifference curve is sloping downward. Okay, indifference curve is sloping downward. And क्यों ये downward है? How can we say that the slope of indifference curve is negative or the slope of indifference curve is downward? It is because to increase the consumption of X by 1 unit, consumer has to sacrifice by some units of consumption Y. X का consumption बढ़ाने के लिए Y के consumption को कम करना पड़ेगा, and because of this sacrifice the slope is negative. और नेगेटिव स्लोप की वजह से ही ये कर्व इस तरह का आता है. एंड दिस कर्व नेवर टचेस ऑन एक्स एक्सेस और ऑन वाई एक्सेस. क्यों नहीं टच करता है? बिकॉज हम इसमें कंजम्पशन को ज़ीरो नहीं करते हैं. ठीक है. अब द स्लोप इज ऑल्सो नोन एज स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉर एक्स ऑफ वाई. x के लिए y का कितना सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर x ऑफ y. ओके, एंड द इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड इट्स स्लोप इज नेगेटिव. नेगेटिव स्लोप के पीछे रीजन क्या है? आई टोल्ड यू दैट इफ ए कंज्यूमर वांट टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ x, he has to reduce the consumption of y. Because of this sacrifice, the slope is negative or marginal rate of substitution is negative.